हे गाइस, तो अब हम लोग वी आर रीडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम हचिनसन, जो कि एक क्लिनिकल बेड साइड बुक है. एंड विल बी रीडिंग, वी हैव रेड टिल पैल्पेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट परकशन. सो व्हाट इज परकशन? जब आप ये दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर को आप ऐसे सॉलिड तरीके से आप ऐसे रखते हो, and this all the fingers you keep it, then you keep this finger above the place where you want to percuss, and then you percuss is like this. You hear the voice, you hear the dull or tympanic sound. सो दिस इज़ वेर वी गेट टू नो कि ये जो नीचे में जगह है यहाँ पे, मान लो वी आर डूइंग इट इन बिटवीन लंग्स और लिवर. तो लंग्स है, सिंस वो उसके अंदर एयर भरा हुआ है, देन अगर हम लोग एयर वाली जगह में ऐसे ठोकेंगे, देन बहुत साउंड, रेजोनेंट साउंड सुनाई देगा हमें, ठीक है. बट देन अगर हम लोग डल, जैसे कि लिवर पे ऐसे ठोकेंगे, तब हमें क्या सुनाई देगा? विल हियर डल साउंड. ओके, सो परकशन में सुनते हैं. परकशन में हमें पता चलता है लंग में कोई कंसोलिडेशन है, फ्लूइड भर गया, ये सब पता चलेगा. कुछ भी होगा ना, अगर एयर नहीं होगा तो डल साउंड होगा. सो द टेक्निक ऑफ परकशन वॉज प्रोबेबली डेवलप्ड एज अ वे ऑफ ascertaining हाउ मच फ्लूइड रिमेन्ड इन बैरल ऑफ वाइन. हम लोग देखते थे कि बैरल को देखते साथ परकस करते थे और पता करते थे कितना वाइन बाकी है. टू द चेस्ट नहीं, हाउ मच वाइन इज लेफ्ट इन द बैरल और अदर लिक्विड्स. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि ऑन बर्गर, हाय शशांक, ऑन बर्गर जो है अप्लाइड परकर्शन टू द चेस्ट, हैविंग लर्नड दिस मेथड इन हिज फादर्स वाइन सेलर. उसने क्या किया ऑन बर्गर ने, कि अपने फादर के वाइन शॉप से सीखा. Okay, so video quality is low. Okay, let me do something about that. Hi Shashank. Now can you see? I'm so sorry for the sound. Shank, please answer. Now also you can't see the words. How is it possible, man? Now also not visible. I've changed the Wi-Fi setting also. Still not visible. Shashank, please answer. Can you see the video? Hello? Hello, Shashank? Shashank, check. Can you see the words? Yes? Okay. तो एक इंसान था ऑन बर्गर जिसके फादर थे. So I can't do anything, yaar. If internet is not good, what can I do about that? I can't do anything. Okay, it's better. So what Orenberger did, that he applied percussion to the chest, having learned this method in his father's wine cellar. Effective percussion is a knack that requires consistent practice. बार बार practice करने से ही percussion करना सीख पाएंगे. Do so upon yourself or on willing colleagues, because percussion can be uncomfortable for patients if performed repeatedly and inexpertly. Okay, Shashank. So the middle finger of the hand is placed on the part to be percussed. ये जिसको परकस करना है वहाँ पे ये मिडिल फिंगर रखेंगे एंड प्रेस्ड फर्मली अगेंस्ट इट. फर्मली उसमें रखना है विथ स्लाइट हाइपर एक्सटेंशन, मतलब दबा देना. हाइपर एक्सटेंशन मतलब दबा देना है. ऑफ द डिस्टल
मतलब ये एकदम, ये दूर वाला पार्ट जो है ना उसको कहते हैं, दिस इज डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन कर देना है। द बैक ऑफ द जॉइंट, the back of this joint is then stuck with the tip of the middle finger. Of the right hand, vice versa if you are left handed. The movement should be at your wrist rather than at your elbow. So we don't have to move our elbow, we just have to move our wrist. ठीक है? The percussing finger is bent so that its terminal phalanges is at right angle and it strikes other finger perpendicularly. So this should be perpendicular. Okay, ऐसे करना है. As soon as the blow has been given, the striker finger is raised. Striker finger ये है, इसको उठा देना है. The action is a tapping movement. The two most common mistake made by beginners at first, failing to ensure that the finger of left hand is applied flatly and firmly to the chest wall with slight pressure. ठीक है, फ्लैट फर्म और प्रेशर की तरह लगाना है, प्रेशर भी लगाना है. और सेकंड मिस्टेक क्या होता है, स्ट्राइकिंग द परकशन ब्लो फ्रॉम द एल्बो रादर देन द रिस्ट. रिस्ट मूवमेंट नहीं होता है, एल्बो से करने लग जाते हैं, वो तो हम अभी भी करते हैं. The character of the sound produced varies both qualitatively and quantitatively. When the air in the cavity of sufficient size and appropriate shape is set to vibrating, a resonant जब एयर जो कैविटी में एयर अगर है सफिशिएंट साइज एंड एप्रोप्रिएट शेप का, अगर उसको वो वाइब्रेट होने लग जाता है, रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड अ कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन इज ऑल्सो फेल्ट बाय द फिंगर प्लेस्ड ऑन द चेस्ट. So try tapping a hollow cupboard and then a solid wall. The feeling is different as well as the sound. The sound and feel of resonance over a healthy lung are learned by practice. And it is against this standard that possible abnormalities of percussion must be judged. Right? The normal degree of resonance varies between individual and in different parts of the chest in the same individual. Being most resonant below the clavicle, so below the clavicle it is most resonant anteriorly, and the scapulae posteriorly, where the muscles are relatively thin, at least resonant over the scapula. On the right side, there is loss of resonance inferiorly as liver is encountered. लिवर जैसे ही एनकाउंटर करेंगे तो लॉस ऑफ रेजोनेंस हो जाएगा. ऑन द लेफ्ट साइड द लोअर बॉर्डर ओवरलैप्स द स्टमक. So there is transition from lung resonance to tympanic sound resonance.
Always systematically compare the percussion note on the two sides of the chest. Moving backward and forward from one side to another, not all the way down one side and then down the other. Percuss over the clavicle. Traditionally, this is done without an intervening finger on the chest, but there is no reason for this, and it is more comfortable for the patient if the finger of the left hand is used in the usual way. Percuss three or four areas on the anterior chest wall, comparing left with right. Percuss the axillae there, then three to four areas on the back of the chest. Reduction of resonance, that is, the percussion note is said to be dull, occurs in two important circumstances: when the underlying lung is more solid. देखो, रिडक्शन ऑफ रेजोनेंस बोल रहा है. यस शशांक, देयर इज मूवमेंट शुड बी देयर. सो ये बोल रहा है कि हमारा जो रेजोनेंट साउंड आ रहा है उसका रिडक्शन कैसे हो जाएगा, डल साउंड कब आने लगेगा. दो इम्पॉर्टेंट टाइम में हमारा डल साउंड आता है. कौन सा? व्हेन द अंडरलाइंग लंग इज़ मोर सॉलिड देन यूजुअल. जो लंग है वो मोर सॉलिड हो चुका है, यूजुअली बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन और कोलैप्स. ठीक है. सॉलिड हो गया अगर अंदर का लंग, कोई कंसोलिडेशन हो गया है तब डल आएगा. और दूसरा में कब आएगा? प्लूरल कैविटी में फ्लूइड है, प्लूरल इफ्यूजन है, तब आएगा. ठीक है. दो ही केस है जिसमें ऐसे परकशन लंग में करने का फ़ायदा होगा. क्या तुम हम ढूंढ क्या रहे हो? तो सॉलिडिफिकेशन देख रहे हो या लिक्विडिफिकेशन? लिक्विडिफिकेशन प्लूरल एफ्यूजन में, सॉलिडिफिकेशन कंसोलिडेशन देख रहे हो. So less commonly, a dull percussion note may be owing to the thickened pleura. The percussion note is most dull with the underlying the pleural effusion. Pleural effusion causes the sensation in the percuss finger to be similar to that felt when the सॉलिड वॉल इज परकस. तो अंदर अगर पानी है तो ऐसा फील होगा कि सॉलिड वॉल जब परकस करते तो वैसा फील होगा. दिस इज ऑफन कॉल्ड स्टोनी डलनेस. स्टोनी डलनेस प्लूरल इफ्यूजन में मिलता है. बाय कंपेयरिंग साइड विथ साइड इट इज़ यूजुअली ईजी टू डिटेक्ट यूनिलैटरल प्लूरल इफ्यूजन. साइड बाय साइड करेंगे, एक इस साइड में करेंगे राइट साइड, एक लेफ्ट साइड में करेंगे, तो हम लोग अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. प्लूरल इफ्यूजन यूजुअली लीड्स टू डिक्रीज्ड चेस्ट वॉल मूवमेंट. So effusion may occur bilaterally in some patients, and this may be more difficult to detect clinically, right? An increased in response or hyper resonance is more difficult to detect than dullness. सो हाइपर रेजोनेंस जो होता है ना, ये तो अभी हम लोग डल के बारे में बात की थी. ये वाला जो है ना हाइपर रेजोनेंस, ये डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करने में. देयर इज़ नो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ नॉर्मल परकशन अगेंस्ट विच एक्स्ट्रा रेजोनेंस में बी जज्ड. It may be noticeable when the pleural cavity contains air, as in pneumothorax में दिखेगा. ठीक है, hyper resonant. Sometimes, however, in this situation, one is tempted to think that the slightly duller side is the abnormal side. Further examination and chest X-ray will reveal true situation. Remembering that the side of the chest that expands less in usual is usually the side with pathology. वो साइड जो कम एक्सपैंड कर रहा है उसी में यूजुअली पैथोलॉजी होता है.
सो लिसनिंग ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट। मैम कहती है आला वाले डॉक्टर हो, तो चलो आओ आला वाला काम देखते हैं, ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट करते हैं। So, listening to the chest with the diaphragm, not the bell of the stethoscope. Chest sounds are relatively high pitched, and therefore the diaphragm is more sensitive than the bell. ठीक है। Ask the patient to take deep breath। तो हम लोग किससे देखना है, डायफ्राम से देखना है। डीप ब्रेथ लेने बोलेंगे, इन एंड आउट थ्रू द माउथ, मुंह से सांस लीजिए बोलना है हमें। सो डेमोन्स्ट्रेट what you would like the patient to do, and then check visually that he's doing it while you listen to the chest. If the patient has a tendency to cough, ask him to breathe more deeply than usual, but not so much as to induce a cough with each breath। एक बार क्या हुआ था ना, मैंने स्थित लगाया था पेशेंट पे, और पेशेंट ने ना बहुत तेज़ खांस दिया, मेरा तो ऐसा लगा कान फट गया है। As with percussion, you should listen in comfortable position to each side alternatively. Switching back and forth from one side to another to compare the breath sounds. So, points to note on auscultation of the chest. So, vesicular breath sound क्या होता है, नॉर्मल ब्रेथ साउंड होता है। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड क्या होता है, कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन प्रेजेंट है तब हमें ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिलेगा। नाउ वोकल फॉर्मेटर्स एंड रेजोनेंस जो है, विस्परिंग पेक्टोरिलो के कंसोलिडेशन एगोफोनी, टॉप ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन कंसोलिडेशन। एडेड साउंड क्या है, प्लूरल रब एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। वीज एजमा में मिलेगा, सीओपीडी में मिलेगा, इन्फेक्शन कार्डियक फेलियर में मिलेगा। क्रैकल्स जो है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कार्डियक फेलियर सीओपीडी में मिलेगा, राइट। ना ब्रेथ साउंड्स सुनते हैं क्या है। ब्रेथ साउंड्स हैव इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। द इंटेंसिटी यानी कि लाउडनेस ऑफ द साउंड मे बी नॉर्मल, रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड। So, the quality of normal breath sound is described as vesicular. नॉर्मल ब्रेथ साउंड क्या होता है, वेसिकुलर। सो ब्रेथ साउंड विल बी नॉर्मल इन इंटेंसिटी व्हेन द लंग इज इन्फ्लेटिंग नॉर्मली, बट मे बी रिड्यूस्ड इफ देर इज लोकलाइज्ड एयरवे। क्या क्या होगा, नॉर्मल हो सकता है, रिड्यूस्ड हो सकता है ब्रेथ साउंड, localized airway narrowing. If the lung is extensively damaged by the process such as emphysema हो रखा है, और if there is intervening pleural thickening और pleural fluid है, then breath sound may be of increased intensity, ठीक है, in very thin subjects. सो हम लोगों ने जो पेशेंट को देखा था ना, ब्रेथ साउंड जो था 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखा था, उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्रेथ साउंड सुनाई दे रहा था। एक कार्डियक भी सुनने जा रहे थे तो ब्रेथ साउंड। तो आई हैव टू टेल कि ब्रेथ साउंड हर्ड इज ऑफ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। तो ये मुझे बताना पड़ेगा, पेशेंट का जो ब्रेथ साउंड है वो इंक्रीज्ड इंटेंसिटी का है।
So, breath sound probably originated from turbulent airflow in the larger airways. When you place your तो turbulent airflow की वजह से होता है. When you place your stethoscope upon the chest, you are listening to how those sounds have been changed on this journey from their site of origin to the position your stethoscope diaphragm. Normal lung tissue makes the sound quieter and selectively filters out some of the higher frequencies. The resulting sound that you hear is called a vesicular breath sound. Oh, so wait. So normally क्या होता है साउंड जो हम लोग सुनते हैं लंग्स में वो क्वाइटर होता है और फिल्टर आउट कर देता है हायर फ्रीक्वेंसीज. द रिजल्टिंग साउंड दैट यू हियर इज नोन एज वेसिकुलर ब्रेथ साउंड. सो वेसिकुलर ब्रेथ साउंड क्या होता है? सो नॉर्मल लंग साउंड होता है जो कि क्वाइटर होता है और फिल्टर आउट कर देता है हायर फ्रीक्वेंसी को. So there is usually no distinct pause between the end of the inspiration and the beginning of the expiration. Like inspire किया और फिर expire किया, कोई यहाँ पे बीच में गैप नहीं होगा. इसको हम लोग कहते हैं वेसिकुलर. नॉर्मल साउंड्स क्वाइटर होता है, हायर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर देता है एंड देयर इज नो गैप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. Now, when the area underlying the stethoscope is airless, as in consolidation, the sound generated in the large airways are transmitted more effectively so that they are louder and there is less filtering of the higher frequencies. When the area underlying the स्थित के अंदर जो एरिया है अगर एयरलेस है मतलब एयर नहीं है और कंसोलिडेशन है मतलब उस कंसोलिडेशन के ऊपर स्थित रखे द साउंड जनरेटेड इन द लार्ज एयरवे आर ट्रांसमिटेड मोर इफेक्टिवली. तो बहुत अच्छे से सुनाई देगा. सो दे आर लाउडर and there is less filtering of the higher frequencies. The resulting sound heard by the stethoscope are termed as bronchial breathing. Vesicular नहीं है ये, bronchial breathing है. Classically heard over an area of consolidated lung in cases of pneumonia. ओ माई गॉड, मेरा जो पेशेंट था ना वो उनका ब्रोंकियल ब्रीदिंग हो रहा था क्योंकि उन्हें निमोनिया था एंड आई कुड एक्चुअली नॉट से उनका पूरे लंग्स में कंसोलिडेटेड हो गया था क्योंकि जहाँ पे भी सुन रहे थे बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देता था. ओ माई गॉड. The sound resembles that obtained by listening over the trachea.
Although the noise there is much louder, the quality of the sound is rather harsh and higher frequency, being heard more clearly. The expiratory sound has a more sibilant, hissing character than the inspiratory one and lasts for most of expiratory phase. The intensity and quality of all breath sound is so variable from patient to patient and in different situations that it is only by repeated auscultation of the chest of many patients that one becomes familiar with the normal variation and learns to recognize the abnormalities. Now, added sounds. So, what are the added sounds? Let's read about the added sounds. So, added sounds are abnormal sound that arises in the lung itself or in the pleura. The added sound most commonly arising in the lung are best referred to as wheeze or crackles. ठीक है, wheeze या crackles बोल सकते हैं. लंग में ओरिजिन किया है ये सारा साउंड या फिर प्लूरा में. ठीक है, जो लंग में अराइज करता है उसको वीज या क्रैकल्स कहते हैं. Older terms such as rails to describe coarse crackles, crepitations to describe fine crackles. Crepitation fine crackles को describe करने के लिए होता है. Rails coarse crackle को describe करने के लिए होता है. And rhonchi to describe wheeze are poorly defined. This has led to confusion and are best avoided. So rails crepitation and bronchi. वीज आर मोर म्यूजिकल साउंड्स. ठीक है, वीज जो होता है म्यूजिकल साउंड्स होता है एसोसिएटेड विथ एयरवे का नैरोइंग. Widespread polyphonic wheeze, particularly heard in expiration, are the most common ones. They are characteristic of diffuse airway airflow obstruction, especially in asthma, COPD. एस्मा और COPD में सुनाई देता है, एक्सपीरेशन के वक्त सुनाई देगा. The V's are probably related to dynamic compression of the bronchi. Bronchi जो होता है उसका compression की वजह से होता है, which is accentuated in expiration. Expiration में bronchi जो होता है और ज़्यादा दब जाता है when airway narrowing is present. A fixed monophonic wheeze can be generated by localized narrowing of a single bronchus. As occur in the presence of a tumor या फिर foreign body. Tumor या foreign body में localized wheeze मिलेगा. It may be inspiratory या फिर expiratory or both and may change its intensity in different positions. So हमें देखना है कि ये जो wheeze या जो भी सुनाई दे रहा है ये inspiratory sound है या फिर expiratory है. सब added sound है. So
What is, hey Shashank, if you are listening, I want to know what is the dinner. डिनर में क्या सब्जी है एक बार बताना तो मुझे. Today it's Thursday. Just want to eat something better. Right now, wheezing generates a smaller airway. Airways should not be wheezing generated in smaller airways should not be mistaken for stridor associated with laryngeal disease and or localized narrowing of the trachea or large airway. Stridor almost always indicate a serious condition requiring urgent investigation and management. The noise is often both inspiratory and expiratory. It may be heard at the open mouth without aid of the stethoscope. On auscultation of the chest, stridor is usually loudest over the trachea. Kesari halwa, वेज जलफिंची और छोला. ओ माय गॉड, आई गो क्रेजी. 2 दिन हम ऑलरेडी खा चुके हैं वेज जलफिंची, पर दोपहर में खाए थे एक बार, एक रात को खाए हैं. एंड नाउ इट्स स्टिल वेज जलफिंची. और केसरी हलवा क्या होता है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दे आर फूलिंग अस, दे आर फूलिंग अस, ऑल ऑफ देम आर फूलिंग अस. ए शशांक, हम लोगों ने पाइनएप्पल नहीं खाया यार. सीजन का पाइनएप्पल चल जाएगा? कितना टेस्टी था वो वाला पाइनएप्पल. हाँ, छोला तो हमको बेकार लगता है. ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट, स्ट्राइडर इज यूजुअली लाउडेस्ट ओवर द ट्रेकिया. ट्रेकिया के पास जो होता है ना, स्ट्राइडर आता कहाँ से? ट्रेकिया से आता है साउंड. सो बेसिकली वो लंग्स में भी सुनाई देता है, बट ट्रेकिया में सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट होता है. सो आई हर्ड स्ट्राइडर. एक बहुत छोटी बच्ची थी. I think she had pneumonia or something. In Comet we went to RSTC गए थे ना. Yes, so I took the case and the girl had she had stridor. So uh, I could hear it from her lungs only. So I remember Rishi was arguing with me that no, it was not stridor, it was something else, or something that we hear stridor just from above. Yes, we do hear stridor. We don't need sthet, but if we apply sthet and if we hear it, doesn't mean that it is not stridor. You can hear stridor from sthet also. Now crackles. अब crackles में आ जाते हैं. Stridor is over. Crackles क्या होता है? तो crackles are short, explosive sound often described as bubbling or clicking. छोटा सा explosive sound होता है, ऐसे करके. Bubbling या फिर clicking. When the large airway are full of sputum, large airway में पूरा sputum भरा हुआ है, a coarse rattling sound may be heard even without the stethoscope. However, crackles are not usually produced by moistness in the lungs. It is more likely that they are produced by sudden changes in gas pressure related to sudden opening of the previously closed small airway. Crackles at the beginning of inspiration are common in patients with COPD. Localized loud and coarse crackles may indicate an area of bronchiectasis. Crackles are also heard in pulmonary edema. In diffuse interstitial fibrosis, crackles are characteristically fine in character and late inspiratory in timing, and said to sound like rolling of your finger through your hair near your ear. Okay. Okay.
सो द थिंग इज कि हमें बताना है इंस्पिरेशन के साथ हो रहा है एक्सपीरेशन के साथ हो रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, वरना ये सब जो भी साउंड सुन रहे हो इट्स यूजलेस अगर हम लोग नहीं बता रहे कि इंस्पिरेशन के साथ हो रहा है कि एक्सपीरेशन। द प्लूरल रब विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लूरल इन्फ्लामेशन। सो प्लूरल रब में आ गए अब हम लोग। प्लूरा का इन्फॉर्मेशन होता है तब प्लूरल रब यूजुअली अकर्स इन एसोसिएशन विथ प्लूराइटिक पेन। Oh yeah, I just forgot to read. Oh my god. Okay, so plural rub जो होता है ना, which is characteristic of plural inflammation, usually occurs in association with प्लूराइटिक पेन। इसमें पेन भी करेगा। इट हैज़ क्रीकिंग या फिर रबिंग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सेड टू साउंड लाइक अ फूट क्रशिंग थ्रू फ्रेश फॉलन स्नो। ऐसा इमेजिन करो अभी तुरंत फ्रेश स्नो गिरा है और उसमें हम लोग का फूट जो है वो क्रश कर रहा है। क्रंचिंग क्रंचिंग, हमारा फ्रूट फूट जो है वो क्रंच कर रहा है उस स्नो में, तो उसी को प्लूरल रब कहते हैं। एंड इन सम ऑफ द इंस्टेंस कैन बी फेल्ट with the palpating hand as well as being audible with the stethoscope. Take care to exudate false added sound. Sounds resembling plural rub may be produced by movement of the stethoscope on the patient's skin or of cloth against the stethoscope tubbing. Sounds arising in a patient's muscle may resemble added sounds. In particular, the shivering of a cold patient may in attempt at auscultation almost useless. जब patient shiver कर रहा है, we cannot auscultate him, right? The stethoscope rubbing over hairy skin may produce sounds that resemble frying crackles. Now, vocal resonance. वोकल रेजोनेंस क्या होता है? सो व्हेन लिसनिंग टू द ब्रेथ साउंड्स, कितना और पेजेस बाकी है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट इज़ अ लॉट। सो मैं तो मेरे को सीवीएस और जीआईटी भी करना है। So when listening to the breath sound, you are detecting with the stethoscope vibrations that have been made in the large airway. Vocal resonance is the resonance within the chest of the sound made by the voice.
Vocal resonance is the detection of vibration transmitted um, to the chest from the vocal cord as the patient repeats a phrase, usually the words 99. The ear perceives not the distinct syllable but the resonant sound. The intensity with which it depends on the loudness and depth of the patient's voice and conductivity of the lung. As always, in examining the chest, each point examined on one side should be compared at once with the corresponding point on the other side. Not surprisingly, conditions that increases or reduces conduction of the breath sound to the stethoscope have similar effect to vocal resonance. Consolidated lung conduction conduct sound better than air conducting lung. अगर हाइपर रेजोनेंस सुनाई दे रहा है इसका मतलब वहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया है राइट. So in consolidation, the vocal resonance is increased. The sound are louder and often clearer. In such circumstances, even when the patient whispers a phrase 1, 2, 3, the sound may be heard clearly. This is known as whispering uh, pectorioloquy. Above the level of a pleural effusion, or in some cases over the area of consolidation. The voice may sound nasal or bleating. This is known as agophony, but is an unusual physical finding. Now let's read vocal firmitus. Now what is this? Vocal firmitus is detected with hand on the chest wall. This is vocal firmitus. 111, 111. It should therefore perhaps be regarded as part of palpation, but it is usually carried out after auscultation. As with vocal resonance, the patient is asked to repeat a phrase such as 99. The examining hand feels distinct vibration when this is done. Some examiners use the ulnar border of the hand, but there is no good reason for this. The flat of the hand, including the fingertips, is far more sensitive. But make sure the fingers are pressed firmly on the chest wall. ऐसे 111 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 111. Okay. From the above, it should be clear that listening to the breath sound, listening to the vocal resonance, and eliciting vocal firmitus, that they are all doing is essentially the same thing. They are investigating how vibrations generated in the larynx or large airway are transmitted to the examining instrument, the stethoscope, in first two cases, and the finger in the third. It follows that in various pathological situations, all three physical signs should behave in similar ways. Where there is consolidation, the breath sounds are better transmitted to the stethoscope, so they are louder and there is less attenuation of the higher frequencies, that is, bronchial breathing is heard. Bronchial breathing similarly, vocal resonance and the vocal firmitus are increased when there is pleural effusion. Pleura है उसमें अगर भर गया पानी, so the breath sounds are quieter या फिर absent.
and the vocal resonance and vocal fermiters are reduced or absent. The intelligent student should now ask, why try to elicit all these signs? The experienced physician will answer, because it is often difficult to interpret the signs that have been elicited, and the three pieces of information are more reliable than one. Putting it together, an examination of the chest. There is no single perfect way of examination of the chest, and most doctors develop their own minor variations of order and procedure. The following is one scheme that combines efficiency with thoughtfulness. Observe the patient gently and the surrounding. Look for any medicines, sputum, pots, inhalants, nebulizer, for example, CPAP machine around the patient's bed. Look at the patient's observation chart. Is the patient using oxygen? And if so, how much? What is the rate? Ask the patient's permission for the examination and ensure he is lying comfortably at 45-degree, right? Examine the hands and take the pulse, count the respiratory rate, assess the JVP, then check the facial signs of anemia, cyanosis, as well as evidence of ptosis and meiosis. टोसिस इज ड्रूपिंग ऑफ द आईलेट एंड मायोसिस क्या होता है, आँख का जो पिपल होता है वो, यू नो, मीडियासिस इज बड़ा हो जाना, मियोसिस इज पिन पॉइंट पिपल. Inspect the chest movement and anterior chest wall. What is the shape of the chest? Feel the position of the trachea and check for axillary lymph nodes. Feel the position of apex beat. Check the symmetry of the chest movement by palpation. Percuss the anterior chest and axilla. Sit the patient forward. Inspect the posterior chest wall. Check for clavicular and supraclavicular lymphadenopathy. Percuss the back of the chest. Listen to the breath sounds. Check the vocal resonance. Check the tactile vocal fermiters. Check for sacral edema. If you are examining a hospital inpatient, always take the opportunity to turn the pillow over before lying the patient back again. A cool, freshened pillow is great comfort to an ill patient. Listen to the breath sounds on the front of the chest. Check the tactile vocal fermiters. Check for pitting edema of the ankle. Stand back for a moment and reflect upon whether you have omitted anything or whether you need to check or repeat anything. Thank the patient and ensure he is dressed or appropriately covered. Putting it together, interpreting the signs. Develop an appropriate differential diagnosis on the basis of the signs you have elicited throughout required thought and practice. Keeping the following in mind will help. If movement are diminished on one side, there is likely to be an abnormality on that side. The percussion note is dull over the pleural effusion and over an area of consolidation. The percussion जो होता है, the duller the note, the more likely it is to be pleural effusion. The breath sound, vocal resonance, and the tactile vocal fermiters are quieter or less obvious over the pleural effusion.
and louder or more obvious over an area of consolidation. I am so sorry. What? I am so sorry. What happened was I heard some technical error and I had to abort the, you know, live stream. Okay, everything clear? Shashank, can you hear me? Oh yeah, buffering. Everything's buffering. Nothing is good. You know what? I logged into I switched on the YouTube. मतलब मैंने YouTube चलाया, and then I saw that Shrishti Mishra was live. I thought, oh my god, this is me. Then I opened it and then I put a heart into it. Yeah, all good now. Yeah, okay. सो प्लूरल एफ्यूजन होगा तो लेस बहुत कम आवाज़ सुनाई देने लगी एंड लाउडर और मोर ऑब्वियस ओवर एन एरिया ऑफ कंसोलिडेशन. ठीक है, अगर नीमोथोरैक्स है मतलब हवा भर गया है उस जगह में तो परकशन जो है वो मोर रेजोनेंट होगा. परकशन दिस वन. But the breath sound and vocal resonance and tactile vocal fermenters are quieter or reduced. Pneumothorax is easily missed. बाकी हर चीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. वाई सो वाटर हो या एयर हो, एयर में तो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा. अगर वाटर है तो उसमें भी रिड्यूस हो जाएगा. पर देन अगर सॉलिड है तो हमारे स्थित में बहुत सही सुनाई देगा. और किस चीज़ में बहुत सही सुनाई देगा? हाथ रखेंगे तो बहुत सही सुनाई देगा. राइट. Now, other investigations, sputum examination. At the bedside, hospital inpatients should have a sputum pot which must be inspected. Mucoid sputum is characteristic in patient with chronic bronchitis. Um, when there is no active infection, it is clear and sticky and not necessarily produced in a large volume. Sputum may become mucopurulent or purulent when the bacterial infection is present in patients with bronchitis, pneumonia, bronchiectasis या फिर lung abscess में. In the last two conditions, the quantity may be large and the sputum is often found foul smelling. महकेगा भी. Occasionally, asthmatic have yellow tinge to the sputum owing to the presence of many eosinophils. People with asthma may also produce a particularly tenacious form of mucoid sputum, and sometimes they cough up casts of bronchial tree, particularly after an attack. Patient with bronchopulmonary aspergillosis may bring up एस्परजिलोसिस हुआ है तो ब्लैक स्पूटम निकल सकता है. स्पूटम विथ ब्लैक पार्ट्स इन इट which is the fungal element of aspergillus. When sputum is particularly foul smelling, the presence of anaerobic organisms would be suspected. ठीक है. Very ill patient with pulmonary edema may bring up pink या फिर white frothy sputum. Rusty colored sputum is characteristic of pneumococcal lobar pneumonia. Blood may be coughed up alone or blood stained sputum produced in bronchial carcinoma. Pulmonary TB, pulmonary embolism, bronchiectasis, pulmonary hypertension.
with mitral stenosis being possible cause. In laboratory, sputum may be examined under the microscope in the laboratory for the presence of pus cells and organisms, and may be cultured in an attempt to identify the causative agent of an infection and antibiotic resistant patterns. Okay, so we were reading, right? So sputum may be examined under microscope and in the laboratory for the presence of pus cells and organism, and may be cultured in an attempt to identify the causative agent of an infection and antibiotic resistant pattern. It is seldom practiced to wait for the result of the examination, and most clinical decisions have to be based on the clinical probability of a particular infection being present. Do not forget to ask for sputum to be examined for acid fast bacilli when appropriate. Tuberculosis requirements specialized technique for laboratory microscopy and culture to identify uh, responsible organism. If the diagnosis is suspect, these tests must be specifically requested. Non-tuberculous mycobacterium can occur in patients with chronic underlying lung pathology such as COPD bronchiectasis. Right? Now let's see lung function test. Do we have to read this spirometry and all of that? Ugh. Really? Do we have to read this? Like, I do not want to. And let's just leave it. Let's just pack up. यहाँ से ना लंग फंक्शन टेस्ट से अगर इफ़ आई वांट टू रीड ना देन हम पल्मों में पढ़ेंगे. अब सीवीएस पढ़ना शुरू करते. थैंक यू गाइस. बाय बाय. विल सी यू आफ्टर सम. Oops, sorry man.